अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपने आईटीसी स्टॉक के बारे में पक्का सुना होगा। और जो आईटीसी एक मीम स्टॉक बन के रह गया था लास्ट 2 से 3 सालों में, आज वो 300 पार कर गया है ऑन 21 जुलाई। वेल, आईटीसी स्टॉक पे बहुत मीम्स बनते थे, जैसे कि ये या फिर ये, और आपने इनमें से कई मीम्स देखे भी होंगे, बिकॉज मोर और लेस इट हैज बीन मूविंग लाइक अ टॉर्टोइज। बहुत ही धीरे मूव कर रहा है और लास्ट 3 साल से इसने 300 का लेवल्स भी टच नहीं करे थे, स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक। बट फाइनली व्हेन सेंसेक्स, निफ्टी आर गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स, आईटीसी हैज गिवन पॉजिटिव रिटर्न्स, दैट टू मोर देन 40% within 2022. Let's talk about what is fueling this. Why is ITC stock rising? What is the future of this stock and should you buy it, hold it or sell it at this point? We'll discuss all of this, but before that, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Every week we post a new case study, personal finance video and much more that we do on this channel. Let's start the video, but before that make sure you're subscribed. Let's start. ITC ने अपने 3 ईयर के हाईएस्ट टच करे हैं अभी and on 21st of July it even touched the level of 300. बट उसी समय जब निफ्टी, सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तब ऐसा क्या है जो आईटीसी स्टॉक को फ्यूल कर रहा है? वेल, देयर आर मेनी रीजन, तो इसको एक एक करके ब्रीफ में समझते हैं। नंबर 1 इज सिगरेट्स। वेल, सिगरेट्स आईटीसी के रेवेन्यू का और प्रॉफिट्स का बहुत बड़ा पार्ट है। इवन इन 2022 40% ऑफ रेवेन्यू ऑफ आईटीसी कम्स थ्रू द सिगरेट सेगमेंट, एंड थैंक्स टू द सेल ऑफ सिगरेट्स, ITC, according to BSE data, is the 13th biggest company in India according to market capitalization. Now, only the cigarette segment has grew by 9% in Q4 of financial year 2022, and this is in terms of volume growth. And the best part for ITC is कि इनके cigarette के sales pre-pandemic levels भी cross कर गए हैं, which means as the world is opening up, as we are going to normal activities, people are going back to offices or businesses as usual. They're again consuming cigarettes, which overall for the country is not that good, I would say. But at a company level, from the company's perspective, it's of course a good news. The second big news here for ITC cigarettes is that government ने last 2 साल से cigarette पे taxes बढ़ाए नहीं हैं या change नहीं करे हैं. And cigarette is considered one of the sin goods. अब sin goods के लिए no news is also a good news, because it is very unlikely that the government will cut down taxes. But if it doesn't decrease taxes, that is also a good news, because that additionally helps the company to gain more revenue out of the sales of cigarette. The second thing here is everything beyond cigarettes. Company has managed to unlock their potential on various segments beyond cigarettes, like agribusiness, FMCG, hotels, stationery and much more. Over the years, ITC has been successful to make a name for themselves and to ensure that they are not only dependent on one good, which is cigarette. कल को अगर किसी स्टेट में सिगरेट्स बैन हो जाती हैं या गवर्नमेंट इस पर टैक्स डबल कर देती हैं, nobody would criticize it, nobody can criticize it, and that is why it was very risky for a company like ITC to be only dependent on cigarettes. The third reason here can be FMCG goods. The demand of FMCG has increased after pandemic, but pandemic में भी जो goods needful थे, जो goods needed थे, उन 2 साल में भी उनकी डिमांड्स कम नहीं हुई थी, just like आटा, दाल और anything else that you get out of a grocery store. But only in the Q4 of financial year 2021-22, FMCG में ITC का profit 20% से भी ज़्यादा बढ़ गया है. Now this can happen due to many reasons again. Opening up of the world is first. Again, opening up on educational institutions or colleges, schools has increased the sales of notebooks, books, pens, stationery and everything that ITC is into. By the way, ITC की कौन सी कंपनी है जो स्टेशनरी में है? बहुत ही फेमस नाम है, अगर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में तो प्लीज ट्राई जरूर करिएगा कि आईटीसी की कौन सी कंपनी है जो स्टेशनरी में है. एंड एक्सपर्ट्स डोंट स्टॉप हियर. एक्सपर्ट्स से कि चाहे अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चाहे अभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रिसेशन आ सकता है, बट आईटीसी इज स्टिल गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग amid all the chaos that we are in the middle of. And that takes us to the last section of this video, which is should you buy it, should you hold it, and what do the experts say? Well, most of the experts are very bullish on this stock right now, and they have been giving a target of around 340, 350. Now, this is again a good target, but do your own research before you buy this stock. For me, I have been holding this stock for a long time, and I'll give you the reason why. Why do I hold this stock? Number 1 reason is I believe in the fundamental of the company. Number 2 reason is I believe and trust the company only on the fact that they are trying to diversify beyond the ambit of cigarettes. Cigarette is a sin good. Nobody knows when the tax can be doubled on it, when it can be banned in a state or a country, which is anyway very unlikely to be. But अगर हो जाता है तो ITC एक दिन में बंद हो सकता है. इसलिए आज वो एक ऐसे जगह खड़े हैं जहां पे 60% of the revenue is beyond cigarette, which is what makes me believe in the company. The third reason to this is that dividend of ITC are usually strong. ITC ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में ₹11.5 के डिविडेंड्स दिए थे. एंड से इफ यू होल्ड अराउंड 1000 स्टॉक्स,
which means yearly ITC आपको 11,000 रुपए दे रहा है. However, I do not recommend you to buy ITC, sell ITC or hold it. If you have it, that's great. If you don't, you can buy it, but do your own research before buying it. For me, ITC is a long-term investing stock, and I'm not going to sell it so soon, even if it touches the level of 350. I hope you got something out of this video, and don't forget to share this with your friends ताकि हम आपको ऐसे ही और वीडियोस ला पाएं आपको हेल्प करने के लिए around the stock market, around investing and what to do and not to do while planning your personal finances. हमारे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं on tax saving, on emergency funds and on entrepreneurship case studies. Do check them out as well. I will see you in next video, but till then, stay healthy, stay safe.